This call is now being recorded. This call is now taking notes. Good evening, everyone. So, am I audible? Am I audible? Voice ଶୁଣା ଯାଉଛି? Yes, sir. Audible. So, 47 questions with reference to the tenure and appointment of member of National Green Tribunal. Consider the following statement. The chairman of a National Green Tribunal hold office for 5 years or until the age of 70 years. True. Yeah, true. So then, expert members of the tribunal hold office for 5 years or until the age of 65 years. So this one also. True. The judicial members hold office for 5 years until the age of 67 years in case of High Court judge or 70 years for the Supreme Court judge. এটা হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিব্ୟୁନାল ସେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେଟା ନୂଆ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଟା କଣ ଥିଲା ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା କହୁଥିଲି କାଲି କହୁଥିଲି ସେଟା କହୁଥିଲି 2021 ବେସିସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ହଉଛି chairman of the tribunal is appointed by governor of the concerned state in consultation with High Court. Wrong. এটা ভুল আছে কোন হবে chairman may be chairman of tribunal is appointed by governor of the concerned state in the consultations with High Court. কোন ভুল হবে ঠিকঠাক কোন হবে Central government. এটা যে chairman of the tribunal is appointed by governor of the concerned state in the consultation with the High Court. Okay. Central government. 1, 2 and আমার কোন কোশ্চেন ছিল নট করেক্ট পচারছি 4 only. করুন hold office for 5 years or up to 70 years age. Expert members are 5 years or until the age of 65. Judicial members are 5 years or until the age 67 or 70 for Supreme Court judge. Chairman is appointed by central government in the consultations with Chief Justice of India, not by the governor. আমি সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মানে কনসাল্ট উইথ দ্য চিফ জস্টিস আমি গভর্নর যে লেখা ହେଇଥିଲା সেটা ভুল হব ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମେମ୍ବର ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ସ କମିଟି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କ'ଣ ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆଡଜୁଡିକେସନ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କେସେସ୍ କଥା ଯୋଉଟା କ'ଣ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ ରେଗୁଲାର କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଲିଟିଗେସନ୍ସ ତା ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ କମ୍ପେନସେସନ୍ କ୍ଲେମ୍ସ and ecological restorations matter. The importance है कि जे NGT strengthen environmental governance एवं enforcement
of environmental laws কথা ভাবছো। And 48, which of the following statement regarding tribunals in India is not correct? Not correct. Okay. And again, tribunals are quasi-judicial body established to adjudicate specialized disputes. Then the এটা ঠিক তো আছে না, নট কারেক্ট, এটা আমি কালি লিখলে quasi judicial প্রথম কইলে। The original constitutions of India contain provisions regarding tribunals under part XIVA. True. এটা না, এটা ভুল না। অরিজিনাল কনস্টিটিউশন রে Oh, ট্রিব্যুনাল মেনটেন নথিলা, হ্যাঁ সেটা লেখাইছে, অরিজিনাল লেখাইছে। তো অরিজিনাল প্রথম লেখা পরে সেটা আসলে, তারপরে পার্ট XIV এটা তো বুঝি হইব নট করেক্ট। Part XIVA of the Constitution, जो 42nd है, जोड़ा include ହେଇଥିଲା ସେଟା ଲେଖାଇଛି। Article 323A, 323B provide করছি tribunal। Done. Constitution ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା। Nature tribunal function as a quasi-judicial bodies with specialized jurisdictions. ସେ କ'ଣ ତାର aim resolve disputes efficiently and reduce the burden on regular court. Correct. Then objective है कि speedy होगा, cost effective justice provide करा जाए। They provide technical expertise in the specialized legal area. All tribunal perform judicial functions similar to the court, but all courts are not tribunals. Okay. Type of tribunals matter देखिए गले, tribunals may deals with tax disputes, land reform, foreign exchange matters, import-export dispute, and elections dispute. 49. With reference to the Central Administrative Tribunal, CAT কথা কইছি, consider the following statement. The Central Administrative Tribunals was established on 1st November 1985 ରେ ହେଇଥିଲା। କାଲି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଏଟା ବି କହି ଦେଇଥିଲି, ଏଟା 1st November 1985 ରେ ହେଇଥିଲା। Then କହୁଛି the headquarters of the Central Administrative Tribunal is located in New Delhi ରେ, it currently has 19 ବି କହୁଥିଲି, 19 ଟା ଅଛି। ঠিক আছে। The chairman of the tribunal most necessarily be a retired chief justice of the Supreme Court only. wrong. ভুল ଅଛି। তারপরে tribunal deals with the disputes related to recruitment and service matter of civil servant under the government of India. True. ঠিক আছে। 1, 2 and 4. Then ଆମର ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ এটা ঠিক ହେଲା। Then composition କହିବାକୁ ଗଲେ the tribunal consists of judicial members and administrative members. Objective यार aim କ'ଣ, reduce କରିବ burden, ଯେ ଯୋଉ ଆମର ରେଗୁଲାର କୋର୍ଟରେ ଯୋଉଟା burden ଅଛି ସେଟା କମେଇବ, ସ୍ପିଡି ଜଷ୍ଟିସ ଆମକୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାଟରରେ ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ସେଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କେତେ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ or until the age of 65, ସେଟା ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା କହୁଥିଲି 4 ବର୍ଷ, 72 କମି ଯାଇଛି। ଓକେ। The members hold office up to 62 years age. Appointment, president appoint the chairman and members of the recommendation of a committee headed by the Chief Justice of India or a judge nominated by Chief Justice. Done. Appointment, president appoint the chairman and members on the recommendation of a committee जोटा कि head थांती, जो Chief Justice of India थांती or a judge nominated by Chief Justice. Chief Justice जहाँ को nominate करथांती, ठीक है। 50. The tribunals character होचे list 1 tribunal central administrative tribunals ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ, environmental protections, compensation for environmental damage, এটা তো environment কথা কইছে মানে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিব্যুনাল को পড়ে আসিব। তারপরে সেন্ট্রাল কথা হলে কোড আসিব D. Service matter of union civil servant. B. Recruitment service dispute, right. State হলে 2 or more state, joint হলে service matter, না না joint হচ্ছে এইটা, ଆଉ হচ্ছে state হলে union civil service, এটা তো ভুলে গেলাম কোথায় বলে। D. D. 1 D also. ए हाँ ठीक ठीक, यूनियन सेंट्रलটা यूनियन কথা, এই স্টেটটা স্টেট রে, জয়েন্টটা ঠিক। সার্ভিস ডিসপিউট রিলেটিং টু দ্য সিভিল ইউনিয়ন সার্ভেন্ট, ঠিক কইলাম, ঠিক আছে। 1985 টা আমি সবসময় মনে করি ক্যাট 1985 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রিব্যুনালস, স্যাট
chairman and members determined by the selection committee. Reform the post of vice chairman in administrative tribunal was abolished 2006. ये ଗୋଟେ important ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉଟା ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି 2006 ରେ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି composition present structure include one chairman and 69 members consisting of 44 judicial and 35 administrative members ତାହେଲେ जो 69 ଟା କହୁଥିଲି 69 34 35 51 national green tribunal କଥା ପଚାରିଛି the national green tribunal established ହେଇଛି 18 ଅକ୍ଟୋବର 2010 with its headquarter new delhi ରେ ଅଛି 18 ଅକ୍ଟୋବର 2010 with its headquarter new delhi ठीक हबो ठीक আছে okay True. the tribunal has regional benches भोपाल कोलकाता पुणे एवं चेन्नई रे अछि एटाई मध्य करेक्ट the chairman of the tribunal most necessarily be a retired judge of the supreme court only सेमति किछि प्रोविजन नाही कोन नाही ओनली से जज अछि सेमति नाही सुप्रीम कोर्ट रे जज हे परिबे या फिर हाई कोर्ट रो मध्य जज हे परिबे tribunal consist of maximum of 20 full time members including judicial members and expert एटा ठीक अछि ना जो ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर्स थांती इंक्लूडिंग जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट थांती 25 मन रखिया अछि 25 टा तापरे ठीक है तो हां ठीक भोपाल कोलकाता पुणे चेन्नई रीजनल ऑफिस भोपाल कोलकाता पुणे चेन्नई माइंड छापी दियो जिनसो को तापरे 20 full time members including 10 टा जुडिशियल आउ 10 टा 10 एक्सपर्ट मेंबर थांती 25 के ना 20 कहले also 20 20. ऑपोज काउंटर करिवे ना रखि दबा ना मोडे अनमस्कर लिखि 20 टा जे 20 टा हला हमर 10 टा जुडिशियल रहले 10 टा एक्सपर्ट मेंबर रहले तापरे एनजीटी फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ठीक है तापरे environmental disputes and cases related to ecological damage it can award compensation kali eta bi lekhaitile ame padithile tribunals issue karibo direction environmental mitigation by restorations pai NGT cases arises under laws such as water eta bi dekhithile water act 1974 thila water says act 1977 air prevention and control of pollutions act 1981 environmental protection act 1986 biological diversity act is done with reference to the administrative tribunals and their structure in India consider the following statement state administrative tribunals are established by central government upon request of state government under the administrative tribunals act 1985 True. tapare joint administrative tribunals can be created duiru adhiga state re way True. then chairperson and members of a joint administrative tribunals are appointed by central government on recommendation of a selections committee that headed by chief justice of state high court ठीक है स्टेट True. पाई ना जॉइंट कथा एटा function of the joint administrative tribunal differ completely from those of state administrative tribunal complete same हला equal था एटा सेमिति कि अलगा नाही हां देखिबा हम कोन देखै छी joint administrative tribunal has power similar to the state administrative tribunal ठीक administrative tribunals adjudicate recruitment service dispute गुडा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रो बुझिबो स्टेट रो तांकर गोल होची स्पीडी रिजोल्यूशंस करबा सर्विस डिस्प्यूट जो जिंस थिबो आउ कोर्ट रो ओवरलोड को कमीबार अछि ट्रिब्यूनल कोन करिवो टेक्निकल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट उपरे तार हस्तक्षेप थाए देयर जुरिडिक्शंस जेमिति कि अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन ग्रीवांस पब्लिक सर्विस सर्वेंट मानकर रहिबो तांकर जुरिडिक्शंस एतिकी एरिया पे कवर करंती जुडिशियल इंपोर्टेंट दे प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल को क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस विदिन द इंडियन लीगल सिस्टम 53 consider the following statement regarding लोक अदालत ए बेस का
नेक्स्ट चैप्टर आसला हमर लोक अदालत प्रोवाइड्स रिजोल्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ठीक है ठीक है जैसे लोक अदालत काम से फर्स्ट लोक अदालत इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जूनागढ़ इन गुजरात इन ईयर 1982 ठीक है तापरे decision of लोक अदालत are binding on the parties there is no appeals against them in any court correct लोक True. अदालत can adjudicate non compoundable criminal offense and impose penalties accordingly এটা ভুল ହେଲା ହେଲା এটা কোন লোক কোন ভুল আছে সেটা নন কম্পাউন্ডেবল অফেন্স এটা হচ্ছে যেটা আছে সেটা আমরা লোক আদালত অন্ডারে আসু না Sir, ये non-compoundable criminal offence कोड टाइप रहेगा? केमिति रहइबो सेटा केमिति बुझिबो माने criminal offence तो normal रहउची but ये non-compoundable criminal offence माने कोड टाइप रहेगा? सेटा केमिति है सर ओडे एग्जांपल टा देखो कोन टिके हम कहिथिली मन पकाइ देखो किछ बेसी जिंस नै कोन सेटा थिला लाइक सर एमिति कि माने attempt to murder की murder टाइप रो जोटा सही टाइप रो Yes, बेसिकली सेटा मर्डर रेप हल्ला कि किडनैपिंग हे करला राइट इन नतले किछि हमें कहू कि किछि क्रिमिनल ब्रीचेस होबो सो इनटी जो चिटिंग हे करला 420 वाला जो केस लागे जोटा कि आईपीसी जोटा मोस्टली लागे कि हमरो मोस्टली आईपीसी ओरिएंटेड जति कि थाए ना मर्डर हेले 320 302 वाला केस लागु छि रेप हेगले 376 लागु छि तो सेटा को हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ବୋଲି कहउछंती राइट जोटा को आईपीसी रो मेजर क्राइम अंडर रे जाय ओके सर देन कंपाउंडेबल हे गेले हमरो हां हां अभिषेक सर कंपाउंड वाला हे गेला नॉर्मल जेमति हमरो बढ़िया बड़ी की नॉर्मल स्नैचिंग वगैरह हे गेला थेफ्ट वगैरह हे गेला से कंपाउंडेबल टा नॉर्मल टा हां जोटी आईपीसी लागि गेला जोटा सीरियसली क्रिटिकल केस हुए जो बड़ बड़ दफा हुए जिंती किडनैपिंग जो रेप कथा कहउतली जाय जिन हमर बे निर्भया केस दिल्ली वाला हेतला सो सिंता केस जका नॉन कंपाउंडेबल कंपाउंडेबल टा नॉर्मल वाला जो थाए जोटा तुम कहउ चाहू से ओके राइट सर गेटिंग सर ओके थैंक यू सर माने कंपाउंडेबल मतलब लेस सीरियस डिफॉर्मेशन केस गुड के सुडा आसीबो नॉन कंपाउंडेबल रे मर्डर रेप किडनैपिंग रबरी जोड़ा हॉट फुल केस गुडा सब सीरियस केस टा तापरे लोक अदालत प्रोवाइड इनफॉर्मल inexpensive speedy disputes resolutions through mutual settlement लोक अदालत were given statutory status under the Legal Service Authority Act 1987 under असला originally हमर जो हेची प्रथमे ऑर्गेनाइज हितला जूनागढ़ गुजरात रे 1982 रे प्रथम थर को it emerged due to large number of pending cases कोर्ट रे सेति सेटा को आसीतला लोक अदालत टा करिया पे alternative to expensive and lengthy judicial proceeding जोड़ा अछि सेटा को सेति पे से जिनसटा शॉर्ट रे करिया पे आसीतला तापरे जल्दी करिया पे लोक अदालत इंक्लूडिंग नेशनल लोक अदालत स्टेट लोक अदालत परमानेंट लोक अदालत दिल्ली लोक अदालत मोबाइल लोक अदालत एंड मेगा लोक अदालत jurisdiction they can hear cases pending in court as well as dispute they have not yet reached court decision of लोक अदालत are final एवं binding on both parties आउ कोन लोक अदालत रे सब अछि सब तो ये भी लिखा ही है किसी ये नहीं जेमिति जोड़ा एछु पॉइंट जोड़ा अछि बहिरे विशेष जिंस देथिबो नेशनल लोक अदालत केबे हितला 2015 हितला स्टेट लोक अदालत माने ताको रेगुलर लोक अदालत बोली कहै जाय जोड़ा कि हमर कंटीन्यूअस लोक अदालत ता भीतर अछि सेला डेली लोक अदालत अछि मोबाइल लोक अदालत मेगा लोक अदालत सोला आसिला थोड़ा परमानेंट लोक अदालत अछि हमर सेटा हमर
केबे हेतला लीगल सर्विस एक्ट जो अछि 1987 रे एस्टैब्लिश हेतला कोन पे हेतला गोटे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो अछि सेटा को रिजर्व करिया पे आस्तिला तापर लोक अदालत कैन टेक अप cases only when both parties agree to settlement or when the court is satisfied. True. Then Lok Adalat has the same procedural power as a civil court under the Code of Civil Procedure 1908. True. Lok Adalat decisions can be challenged in the High Court through an appeal. No, wrong एटा ठीक ठाक कौन अब चैलेंज ही परिबो ना सर फाइनल था ना लोक अदालत रो फाइनल आ बाइंडिंग था डिसीजन टा सेटा तांगर फाइनल आउ तुमे अपील करि परिबो लोक अदालत may receive evidence on affidavit and request public record from court or office. ठीक अछि Yes. Lok Adalat usually consist of judicial officer as a chairman along with lawyers and social workers as members. Jurisdictions तार से हैंडल करंती जेमिति कि मैट्रिमोनियल केसेस, सिविल केस, लेबर डिस्प्यूट्स, पेंशन केस वगैरह एवं कंज्यूमर डिस्प्यूट वगैरह को से हैंडल करंती। एडिशनल केसेस जेम देखियो के डील्स विथ टेलीफोन बिल डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी केसेस, व्हीकल एक्सीडेंट कंपेंसेशंस केस, बैंक robbery cases, workers compensation case, house tax matters. This is also stated करिए। लोक अदालत functions authority structure. Loc functions through Supreme Court Legal Service Committee, State Legal Service Committee. माने एई सब जिंसरु से तार अथॉरिटी को गेन करिछि है ना सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड तालुक लीगल सर्विस कमिटी एठू से तार अथॉरिटी को गेन करिछि लोक अदालत resolutions of disputes through mutual agreement ठीक है ठीक हमरो ट्रू सर तापर ग्राम न्यायालय जस्टिस डिलीवरी इन रूरल एरिया एटा मध्ये ठीक अछि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा फ्री लीगल एड वीकर सेक्शंस मान को दबा फैमिली कोर्ट में कल देखथले सेटलमेंट ऑफ मैरिज एवं फैमिली डिस्प्यूट्स सब ठीक ठीक अछि ए बी सी डी डी ग्राम न्यायालय वर एस्टैब्लिश अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 आ सेटा फ्रॉम 2 अक्टोबर 2009 रु काम करिया स्टार्ट करथला एस्टैब्लिश हितला ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 आ स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 2 अक्टोबर 2009 ऑब्जेक्टिव थिला कि जे जस्टिस प्रोवाइड करिवो डोर स्टेप रूरल सिटीजन मानकु ग्राम न्यायालय हैंडल करिवो बो सिविल मानकु सिविल क्रिमिनल मैटर गोटे सिंपल प्रोसीजर थ्रो रे सो स्पेशल फीचर है कि जे फंक्शन जे मोबाइल कोर्ट हिसाब रे काम करे जोठी दरकार पड़िबो गां गां बोली कि सेठी बसै कि भी करि परिबे साने प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 56 with reference to the gram nyayalayas in India consider the following statement gram nyalaya are established by state government in consultation with the high court ठीक अछि they aims to ensure justice at the doorstep for rural populations correct the presiding officer of gram nyalaya is known as न्यायाधिकारी must be a first class judicial magistrate थांती एटाई मध्य ठीक अछि क्रिमिनल केस इन ग्राम न्यायालय आर जनरली डिस्पोज्ड विदिन 6 मंथ रे करिवार अछि एटाई मध्य ठीक एक्स्ट्रा ग्राम न्यायालय आर क्रिएटेड हम जानले कि जे ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 अनुसार हला प्रत्येक पंचायत रे ग्रुप ऑफ पंचायत बा गोटे ग्राम न्यायालय इज एस्टैब्लिश फॉर ईच पंचायत और ग्रुप ऑफ पंचायत को मिसिकी गोटे ग्राम न्यायालय थाए बा प्रत्येक पंचायत रे गोटे ग्राम न्यायालय थाए प्रोसीजर है कि जे
Criminal case follows summary procedure, while civil case follows special procedure. Guiding principle preceding follows a principle of natural justice को follow करूची. पाखापाखि आम मैक्सिमम जिन जानीदे आउ गोटे जिन जो कंपोजिशन थाए से आमर प्रथम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट तो था आउ कौन था से जो मैंने भी अपॉइंटेड हेबे से स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा अपॉइंटेड होती कंसल्टेशन हाई कोर्ट रे कंसल्टेशन रे अपॉइंट होती आ सेथिरे एससी एसटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एवं कम्युनिटी रो किछि पार्टिसिपेशन थाए माने तांकु नेकी कंपोजिशन हे थाए. आउ अपील कथा देखि आमे से विदिन 6 मंथ ना एटा कोन डिस्पोज होवा कथा से भली आ तार अपील ता जो अछि ता जो अपील जहा हबो तुमे मन कर से तार जो जजमेंट रो अपील ता तुमे सेशन कोर्ट को तुमे नेकी जिवो. सिविल केस रे एटा क्रिमिनल केस पई सिविल केस रे तुमे नेकी जिवो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जेमित पढिथिले सेटा सिविल डिस्ट्रिक्ट पई सिविल दिला क्रिमिनल पई सेशन कोर्ट थिला तार अपील ता सेही अनुसार ता ऊपर को जिवो. सेठी भी 6 मास थिला एठी भी सिविल 6 मास अछि. लैंग्वेज जदि पचार को लैंग्वेज रे सेठी हुए सेटा लोकल लैंग्वेज रे कंडक्ट करा जिवो लोकल स्टेट लैंग्वेज रे हो. तापरे विथ रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा एंड फैमिली कोड कथा पचाची नालसा वाज constituted under Legal Service Authority Act 1987 and become effective on 9 November 1995. ठीक है ठीक अच्छी हम पढ़ी के सिर्फ नालसा ना नालसा बनते सेटा आर्ट पढ़ते नालसा होची 1987 लीगल सर्विस अंडर एक्ट रे सेटा कॉन्स्टिट्यूट हेतिला आ सेटा इफेक्टिव फंक्शन हला 9 नवंबर 1995 रे. नालसा derives constitutional basis from article 39A of the constitution. এটা ঠিক আছে. Then family court are established under the Family Court Act 1984. Family Court established under the Act 1984 deals with matrimonial disputes এবং maintenance issues ପାଇଁ ସେଟା ହେଇଥାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ correct. ତାପରେ family court are established by union government এটা ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ family court ଟା state government को द्वारा with consultation with high court ର consultation ରେ ହେଇଥାଏ. फोर Family Court established by state government in consultation with High Court. NALSA देखिए गले aims to create an uniform legal service network across India. Function it provides free legal aid to weaker section of the society. Organize it में हिता एक लोक अदालत for amicable dispute settlement. तापरे conduct legal awareness camps ପାଇଁ एडा conduct कराय जाय मते. एबे लोक अदालत रो एबे भी थिला किछ दिन पूर्व आसला जे तार कोन जो माने फाइन जो मान अच्छी गाड़ी रो फाइन से गले ये 50% रे कटि जिवो बा एमिति भी हुए एका थर के एटा डिस्प्यूटा रिजल्व भी जाय बोंती. एलिजिबल फॉर द फ्री लीगल एड बेनिफिशियरी इंक्लूड वुमेन चिल्ड्रन एससी एसटी इंडिविजुअल वर्कर्स पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स पर्सन इन कस्टडी एवं विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एमाने से फ्री लीगल एड पाती. तापरे इनकम क्राइटेरिया देखिए गले इंडिविजुअल्स विथ एनुअल इनकम जो मानकर 1 लाख ओके इंडिविजुअल विथ एनुअल इनकम बिलो 1 लाख से माने फ्री लीगल एड पाई परिबे. 5 लाख इन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी. Constitutional support these service ensure equality before law under Article 14 and protection against arrest and detention under Article 22 clause 1. एथु ताको सपोर्ट मिलिछ Article 14 and protection against arrest or detention 21. Okay. 58 which of the following statement regarding Panchayat Raj system not correct. Panchayat Raj system was first inaugurated in
2nd October 1959 at a Nagore in Rajasthan, right? ठीक है सेटा पंचायत राज हमरो aims to decentralize government and promote local self government एटाई मते ठीक अछि National Panchayat Raj Day is celebrated every year 24 April Panchayat Raj Day. The Panchayat Raj system was originally introduced in the Constitution of India in 1950 itself under Part IX. सेटा भूल अछि सेटा केबे आसला कोथु आसला 73rd Constitutional Amendment Act 1992 ରୁ ଆସିଛି ଏଟା Father of local self government India रे हम कहा कोंती लॉर्ड रिपन को कोंती 1882 तांकर प्रपोज थिला कि जे 82 डेज कोन मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जे से प्रपोज को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है कि जे डिसेंट्रलाइजेशन करा जीवो ऑफ गवर्नेंस एवं स्ट्रेंथनिंग करिवो डेमोक्रेसी ग्रास रूट रे स्ट्रेंथनिंग होवा दरकार सेठू हमरो 243 रु आसी कि 243 ओ पर्यंत तार आर्टिकल रहिछि पार्ट आईएक्स रे प्रोवाइड करा जाइछि आउ सेटा 11 शेड्यूल रे लिस्ट कर दियाइछि पंचायत नॉर्मली हैव द 5-year tenure तार है एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोके 7th Constitutional Amendment Act came force 24 April 1993 ठीक है छेरा True, sir. Then Panchayat Raj is subject listed in the state list of the constitution. ताबरे ठीक अछि पंचायत elections are conducted by Elections Commission of India. भूल अछि the state financial commission is constituted every 5 year by governor. ठीक अछि तो स्टेट फाइनेंशियल कमिशन कथा कहउची आर्टिकल 243I पंचायत एवं आर्टिकल 243I एटा अछि I एटा Y फॉर म्युनिसिपैलिटीज इट इज constitutional body consisting of जने चेयरमैन आउ चारिटा मेंबर फंक्शन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत कथा बुझिबो रेकमेंड करिवो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस एवं ग्रांट इन एड जहां किसी पैसा केमिति डिस्ट्रीब्यूट होबो से देखिबो पंचायत राज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एवं सेपरेशन ऑफ पावर देन एमन सब विभिन्न सारा कथा कहितले से विषय लिखाई क्वेश्चन रा पड़ी आ कोन पंचायत राज रे बहुत दिन अछि तो बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 constitutional recognition of panchayat कौन सब कहितले से 3 टायर कहितले प्लानिंग डेवलपमेंट एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल करो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोन करिवे जे कि चेयरमैन हो जिला परिषद रो एकदा कोइ नथले कि रेकमेंड करथिले 3 टायर पंचायत राज सिस्टम कोन ग्राम पंचायत विलेज रे हवा दरकार पंचायत समिति ब्लॉक रे हवा दरकार आउ जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट रे हवा दरकार विलेज लेवल रे इलेक्शंस टा डायरेक्ट हबो ता ऊपर लेवल ले
indirect elections habo, higher level indirect. बलवंत राय मेहता कमिटी यार आंसर कौन हो? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायत तापरे थ्री टायर पंचायत राज एठी हौ सब कहि दे तापरे देखिबा अशोक मेहता अशोक मेहता रे कोन अछि? अशोक मेहता कहिथिले टू टायर सिस्टम जिला परिषद कथा कहिथिले आउ मंडल पंचायत जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट मंडल पंचायत विलेज रहबा दरकार आउ कहिथिले हमर टैक्स कथा टैक्सिंग पावर टा मैंडेटरी हवा दरकार रिजर्वेशन रखो एससी एसटी मानंग पाई एटा तो कहिथिले आउ कोन कहिथिले ऑडिट सोशल ऑडिट तापरे अशोक कले अशोक परे अशोक रंग टाइम पीरियड के थिला एटा 57 थिला सेटा 77 तापरे अछंती अशोक परे ए परे डी ए डी थिला दंतुवाला कमिटी 1978 ये कौन कहते ब्लॉक लेवल प्लानिंग तापरे हनुमंता कमिटी 84 थिला से कहिथिले हमर कोन हमर होची डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कथा कहिथिले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी गुडे थिया हला तापरे ये गला पर एठी असला जीवीके राव तब सिंघवी जीवीके राव से आसबे गोटे वर्ष पर 1985 रे थिले से कहिथिले कि जे जिला परिषद कथा जिला परिषद आउ कोन कहिथिले हमर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशन एठी से प्लानिंग कथा कहिथिबे हनुमंता ये कहिथिबे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पोस्ट गुटे क्रिएट करो आ सेटा ही ग्रास रूट लेवल टाकू करिया पे कहिथिबे से से गुटे स्टेटमेंट देथिबे जे ग्रास विदाउट रूट एलएम सिंह भी तापरे होचंती लास्ट को के लास्ट के हम संगठन कमिटी ओके देन एलएम सिंह भी जो कहिथिले से कोन कहिथिले से कहउथिले कि जे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेशन दियो एही प्रथम थर आसला तापरे न्याय पंचायत गठन करो तापरे जोडा होची हमरो फाइनेंशियल रिसोर्स ताकू प्रोवाइड बेसी करो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ला दे दियो सेरा कहउथिले तापरे थुंगन कमिटी रे थिला हमरो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एठी से सब मिसी कहिले आ कोन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग तयारी कर दियो थ्री टायर दे दियो तमर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जे हेबे सी होचंती जे जिला परिषद रो हेड रहिबे सी तांको ना दे दियो सीईओ आउथिले स्टेट फाइनेंशियल कमिशन उडे स्टेट प्लानिंग कमिटी गठन कर दियो सो ये तांको परे मु भूल के हां एंको परे आ जण थिले थुंगन कमिटी परे गडगिल मन पडला गडगिल कमिटी ये भी सिभला कहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दवा पे आ होची इलेक्शन कथा भी कहिथिले डायरेक्ट इलेक्शंस करो 5 वर्ष को थरे आ कोन टैक्स ऊपर टैक्स कथा भी से कहिथिले टैक्स कलेक्ट करिवा पे से भी लगी चाहिले भी तापर लेवी करि परिबो तापर तो सेठी आसला आ कोन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेठी आछि आ जेबीके राव कमिटी कोड हबो आंसर टू टायर पंचायत ना सॉरी अशोक मेहता रे कोन हबो टू टायर तापर जीवीके राव
ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ତ କଣ ମତେ କୁହ। এইটা হচ্ছে বলবন্ত রায়টা হচ্ছে 3 টায়ার, অশোক মেহতাটা হচ্ছে 2 টায়ার, জিবিকেটা হচ্ছে জিলা পরিষদ ହେଲା, এলএম সিংভিটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল। সরিলা তো ঠিক আছে। এ 4টা এ 4 এ হ্যাঁ ঠিক। 1D 2B 3C 4A। এইটি কোন লেখা আছে? बलवंत राय मेहता कमिटी 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, अशोक मेहता रिकमेंडेशन 2 टायर डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद कथा मंडल पंचायत कथा कहले। जीवीके राव सजेस्ट स्ट्रंगर रोल्स फॉर जिला परिषद कथा कहले। एलएम सिंह भी कहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस देले रिकॉग्निशन पंचायत रे जुटा हैला। तो बलवंत राय मेहता को कहा गला जे आर्किटेक्चर ऑफ पंचायत राज सिस्टम बोली कहले। पीके थुंगन कमिटी जो थिला से 89 रे जुड़ा पॉलिटिकल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर पंचायत राज सिस्टम। Then this committee contributed to constitutionalizations of panchayat in 1992 जोड़ा 73rd कलर को with reference to the structure एवं functions of panchayat raj institution. Panchayat raj follows 3-tier structure consisting of gram panchayat, panchayat samiti, jila parishad. ठीक अछि। True. ग्राम पंचायत is a primary institution at the village level जे कि सरपंच तार हेड थांती। True. पंचायत समिति function as block or sector level and its secretary is the block development official. ठीक अछि। जिला परिषद member are nominated by state government and not directly elected. इटा में पढ़िले कि से डायरेक्टली इलेक्टेड थांती, जिला परिषद मेंबर माने डायरेक्टली इलेक्टेड थांती। यस विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सरपंच प्रधान मुखिया 4 मेंबर जिला परिषद आर डायरेक्टली इलेक्टेड। पंचायत फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उपरे, सोशल डेवलपमेंट उपरे फोकस थांती। से माने ताधरे 29 सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ले अछि। इनकम्स कोथरु आसे लोकल टैक्स रु, फेयर टैक्सेस रु, ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रु आसे। रिजर्वेशन देखिया गले एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन एम एससी एसटी थांती एवं वुमेन थांती विथ 50% रिजर्वेशन इन मेनी स्टेट्स। ए कोन एमित कोन लिखले कोन केते जण दाता भीतर थांती रिजर्वेशंस का कौन था कि 1/3 हमर थांती केते हमर वुमेन थांती ना। Sir. हाँ 36 लिखे सीटा ओके एससी एसटी एवं वुमेन्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन से ठीक है 33% ठीक है। आउरी सेठी उडा अछि हमर कोन दिला अरुणाचल प्रदेश ऊपर ए जो एससी रिजर्वेशंस ता अरुणाचल प्रदेश रे एप्लीकेबल नुहे सेटा होछि 83rd अमेंडमेंट 2000 थिबो 83rd सेही बेसिस रे अरुणाचल प्रदेश रे एससी रिजर्वेशंस ता 2030 पर्यंत एटा फिक्स कर दिया एससी एसटी। With reference to the Panchayat extension of scheduled area, PESA कथा कहला, the PESA Act was enacted in 1996 based on recommendation of Huria Committee. मैं कौन सॉरी लगी हो ये म्युनिसिपल डेस और सब बहुत सारा अछि केमे कौन अछि जे देखले बर्तन आतर ड्यूरेशन से रिजर्वेशंस कर देखले तबरे ड्यूरेशंस 5 इयर्स नहीं फ्रेश इलेक्शंस within 6 months एक हवार अछि फ्रेश इलेक्शंस
आ जोड़ा न्यूली रिकन्स्टिट्यूटेड पंचायत जोड़ा हैला सेटा सर्व करबो केते की रिमाइंडर ऑफ द टर्म माने ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म पई से सर्व करबो ना कि जे पूरा करबो माने करो से जे अधा रु सरी जाइथिबो टोटल कंप्लीट कर न करी 4.5 मास सरथिबो तो माने सेउडु 5 मास करबोनी कंप्लीट करबोनी 5 वर्ष करबोनी से सेही टर्म टा करबो न्यूली कन्स्टिट्यूशन ओनली द रिमाइंडर ऑफ द टर्म पई कोर्स डिस्क्वालिफिकेशंस को बेसिस रो डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट लॉ बेसिस रे डिस्क्वालिफिकेशन हबो मिनिमम 21 एज लिमिट यस बसिया पे हेले तापरे म्युनिसिपल को आसो कोन एटा छी पेशा कथा जे पेशा एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1996 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भुरिया कमिटी ठीक अछि ठीक अछि ना it applies to the scheduled area mentioned in 5th schedule of the constitution True. the act aims to preserve traditions and customs of tribal community and promote self governance. True. Then Panchayat Raj institutions are fully applicable in all northeastern states, including Meghalaya, Nagaland. এটা ভুল আছে না এটা রং আছে স্যার সেটি এডিসি রয়ে না স্যার Panchayat Raj institutions not fully applicable in all surrounding, not from the states. What answer is C? Report देखिए Panchayats are not formed in the state like Meghalaya, Nagaland, and also not in the Union Territory of Delhi. PESA was enforced 24 December 1996. Cover code applies to 10 states including Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand. Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Jharkhand. Gram Sabha role kotha koachi Gram Sabha plays a central role in the governance of scheduled area. Forest Right Act, which is under the Forest Right Act 2006, Gram Sabha help provides forest and occupations rights to tribal community. Purpose: PESA strengthen tribal autonomy, cultural preservations, and local self-governance. Which are the following statement regarding municipality kotha koachi? First, municipal corporations in India was established in Madras during 1987-88 and is considered among the oldest in the Commonwealth. ठीक है The constitutional provision related to the municipalities were introduced through the same 74 Constitutional Amendment Act. True. Part IXA of the Constitution deals with municipality become effective from 1st June 1993. Effective secretary. The constitutional provisions relating to the municipals are contained in Part IX of the Constitution along with the Panchayat. It is A. Okay. First municipal corporation which is Madras. It is one of the oldest municipal institution in the Commonwealth country. From 1st June 1993 ru seta implemented hela bole lekhaichi. So ethra jinso achi municipal corporation joda achi established Kolkata, Mumbai in 1726 re hitla. Lord Ripon resolutions 1882 is regarded as foundation of local self-government in urban area. Tapre pre-independence act re Government of India Act 1919 re introduce karaichi clear provisions for urban administration by introduce karaichi. Cantonment Act Civil Pass 1924 re Government of India Act 35 local self-government
ए स्टेट सब्जेक्ट बोली कहगला कोठी 35 रे स्टेट सब्जेक्ट शेड्यूल एवं आर्टिकल कथा कहउची म्युनिसिपल फंक्शंस आर लिस्टेड इन द 12 शेड्यूल रे रहला articles relating to the municipalities range from article 243p to article 243zg केतरा सब्जेक्ट अछि हां 18 टा আছে 18 टा फंक्शनल आइटम्स रे केते 243 रू p रू 243 zg आउ कोन अछि हमरो टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी जे देखले हमें पूरा अछि नगर पंचायत तापरे म्युनिसिपल काउंसिल पूरा स्मॉल कथा कहउची नगर पंचायत को ट्रांजिशन रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल हां एटा काउंसिल तापरे कॉर्पोरेशंस म्युनिसिपल लार्ज पे कहउची एटा केते नंबर आर्टिकल एटा होची 240 243 क्यू तापरे 243 आर रे अछि 243 ता कंपोजिशन कहउची कंपोजिशन रे कोन अछि डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली इलेक्ट हेबे ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड होंती होटू फ्रॉम वार्ड रू इलेक्टेड होंती से जोडे अछि ता भितरे वार्ड कमिटी ए कथा नै कि वार्ड माने वार्ड कमिटी कथा कहउ अछि वार्ड कमिटी सेबला अछि एस 243 एस ओके 243 एस सेतरे कोन अछि पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख रु अधिक जोठी हेबो सेठी एटा एस्टैब्लिश्ड हुए आ कोन अछि रिजर्वेशंस 243 एस पर टी रिजर्वेशंस था टी रे रिजर्वेशंस को था कहै छी सेतरे एससी एसटी मानन को रिजर्वेशन दिया हिथिबो वुमेन मानन को 1/3 कथा थिबो मान 33% सेबला ओबीसी मानन पई भी अछि ड्यूरेशंस तबरे ड्यूरेशन ला यू अछि हला ड्यूरेशन 5 वर्ष सेबली फ्रेश इलेक्शन 6 मास भितर हबार अछि पावर एंड फंक्शंस को देखियो गेले सेबली बार 12 शेड्यूल तो हम देखिले सेटा 243 डब्ल्यू पावर एंड फंक्शंस तापर से फाइनेंशियल कथा दिया छी ऑडिट कथा दियाला तापर हमें बहुत सारा जिनस हम देखियो पाइबा क्वेश्चंस देखबा कि जे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज अंडर आर्टिकल 243 क्यू एबे जस्ट हम कहि देली The State Elections Commission conduct elections to municipality. True. Tapre, the persons below the age of 21 year is qualified from contesting municipal elections. सेठी जेमति हम कहिथिलि 21 कथा कहिथिलि सेठी कोन हो सेम हो नै एटा रॉन्ग है ना सर बिलो लिखि जे 21 का सेबा हम पूर्वटा से नै कि हां ट्रू सर डिस्क्वालीफाई जे ट्रू municipality can levy tax only with prior approval of Parliament of India. Parliament it can yes ready state legislature डेट कथा 243 ना सर 2 हां एटा केवल बोलबो 1 2 3 yes एटा हम देखिले आर्टिकल्स तीनटा हम कहिले स्टेटमेंट 2 करेक्ट State 3 because persons below 21 years disqualified membership 4 is incorrect because municipality derive tax from state legislature not the parliament reservation कथा भी लिखै छी 136 are reserved for SC ST women's कथा है ना tenure देखियो गले 5 वर्ष first session reservation जोड़ा जी election must be held within the 6 months in case of premature resolutions power कथा देखियो गले तारो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हवा दरकार सोशल वेलफेयर प्लान्स इस जिनस ता अंडर रे आसे
तापर रेवेन्यू सोर्स देखिया गले कलेक्ट टैक्सेस फी टोल्स रेंट अलोंग्स विथ द ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड टू समाने कलेक्ट कर 64 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कौन हबो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ता किए एठी हबो एटा हबो हेडेड बाय मेयर सोडा ओपरटा तापर म्युनिसिपल काउंसिल कौन हबो पॉपुलेशन 20,000 and 3 lakhs ता भितर काउंसिल नगर पंचायत एटा कर दबा तापर सेटा देखिबा हमें कौन सब अछि नगर पंचायत population below between the 10,000 and 20,000 सेटा आराला तो रहला टाउन एरिया कमिटी Association of Small Developing Town कोबी अछि फर्स्ट ठीक अछि तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1D थिला तापर म्युनिसिपल काउंसिल B 20,000 and 3 lakhs नगर पंचायत population between 10,000 and 20,000 town area committee ठीक आ कौन अच्छी म्युनिसिपालिटी रे बहुत जिनस अच्छी तो प्रथम जो टाइप्स ऑफ अर्बन रे कॉर्पोरेशंस कथा देखिले कॉर्पोरेशन रे कौन हबो मेयर तांकर हेड थांती से भली तापरे आसबो कोन म्युनिसिपालिटीज रे से भली से दिखे थांती हेड सर मेयर अपॉइंटेड होइथांती ना डायरेक्ट इलेक्टेड होइथांती कि इनडायरेक्ट मेयर मेयर हमर इलेक्टेड कोन दिछि इलेक्टेड सर डायरेक्टली एट मेयर रो इलेक्शन सुन ना डायरेक्ट बस दिछि कटक ओके सर तापरे म्युनिसिपालिटी से बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाउन एरिया रे किम थिबे इलेक्टेड होंती नॉमिनेटेड होंती सेठी ओके तापरे कैंटोनमेंट बोर्ड ए जोड़ा इंपोर्टेंट जोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड कोडा सेटा गोटे कैंटोनमेंट एक्ट 2006 आ सेतिरे हमरो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो थांती आ सेटा किए तांको अपॉइंट करंती सेटा इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करंती नोटिफाइड एरिया तापर आसे नोटिफाइड टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट एवडा सब आसीबो सेठी सेवडा से नोटिफाइड टा पूरा एंटायरली नॉमिनेटेड ही आसंती टाउनशिप टा जो जगह रे गोटे माने एंटरप्राइज थिबो गोटे लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज थिबो गोटे सेटू से जो स्टाफ मानन भितरे स्टाफ मान जो काम करथिबे से जोडे बड़ टाउनशिप क्रिएट हो जाए सेटा को है पोर्ट एरिया पाखर जोटा हबो सेटा पोर्ट कथा होची सेठी इलेक्टेड होंती नॉमिनेटेड भी होंती ओके आउ कोड में लगे थी तो ओके से जो कैटेगरी टाइप अछि होला कैटेगरी 1 2 3 एंड 4 टा अछि 50,000 रु कम 10,000 रु 50,000 2,500 रु और 10,000 आउट 25 हमर 25 रु कम जोटा अछि
with reference to the Cooperative Society in India. First Cooperative Credit Society Act in India was passed in 1904. Okay, यहाँ पर Cooperative Society ଆସିଗଲା ठीक ଅଛି Cooperative Society receive এটা কোন ফার্স্ট ঠিক ଅଛି ହେଲା ফার্স্ট ঠিক ଅଛି ତାପରେ Cooperative Society receive constitutional recognition through the 97 first 2011 ঠিক ଅଛି ভুল ଅଛି 97 ହେଲା our provision relating to the cooperative society are included in part IXB of the constitutions रे मध्य ठीक अछि cooperative society are governed directly by union government under the union list cooperative society state list under रे आसे first cooperative credit society 1904 रे हला promoted by EF Nicholson State 2 रे हमर स्टेटमेंट 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड गेन करछि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 तीन कहूची आईएक्सबी रे सेटा रखा गला 243 जेड एच रु 243 जेड टी हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइमरीली फॉर विथ द स्टेट लिस्ट रे रहला हां सेटा मथिला एटा बस स्टेट लिस्ट रे तापरे कोऑपरेटिव प्रमोट्स सेल्फ हेल्प म्यूचुअल assistance and community development. They contribute to social economic development of members. Maximum number of board members is 21. Board members one ले केदरे 21 रे अब कोन अछि tenure तांकर 5 years okay from the date of elections. Elections are conducted by an authority determined by the state legislature. How कौन सब cooperative society अछि state list रे केते नंबर एंट्री एटा ओड इंपोर्टेंट केते नंबर एंट्री 32 sir 32 आउ कौन सब कोई चलो article 43 bravo sir b sir आर्टिकल 43b हां 43b राइट डीपीएसपी रो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 43b फंडामेंटल राइट रे 19 राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट्स 19 रो अछि तापर एटा होछ हमर कोन जेते जेड एच रु जेड टी ओके 5 वर्ष जानचो रिजर्वेशन से बडी एसएसटी मानकर केतरा सीट 1 सीट एससीएसटी दुईटा सीट वुमेन्स मानक दिया जिवो एठी खेले अलका 1 सीट एससीएसटी दुईटा वुमेन तापर से बडी देखिया गले जो हमर मैक्सिमम 6 मास भितरे परिवार अछि कोन तो इलेक्शन कथा बुझियो से हम सस्पेंड हला 6 मास पर्यंत ताको सस्पेंड कर करी ऑडिट कथा भी अछि तापरे हमें देख पाइबा ऑडिट रे केते थरा ऑडिट विद इन 6 मास रे ताको ऑडिट करा जाय के करे स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आसीबो तो से माने ऑडिट कर Which of the following statement regarding planning committee under the constitution not correct पचाची district planning committee is constituted under article 243 ZD ठीक अछि metropolitan planning committee is constituted under article 243 ZE ठीक अछि district planning committee prepare a development plans for the district as a whole definitely ठीक metropolitan planning committee is constituted by president of India for planning metropolitan region एटा ठीक नै
कौन हम किए किए करिवो प्रेसिडेंट हाथ में कहीं कथबार्ता से स्टेट लॉ अनुसार कथबार्ता आसे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट फॉर प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन रीजन्स इटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कथा लिखा है इटी integrates rural एवं urban development plans in the district रे metropolitan planning committee prepare development plans for metropolitan area urban planning रे देखुछन this committee ensure coordinate planning between municipality एवं पंचायत तांगर एम होची इन integrated economic एवं spatial development of district एवं metropolitan region constitutional vision देखिया गले इ जो provision जो होची से कोन करे strengthen decentralized planning under 74 constitutional amendment अनुसार ताकू provisions टा देइछ 67 को आसो एटा होची शेड्यूल एरिया कथा अछि एटा हमें देखिबा काली देखिबा मुटके देहटी प्रॉब्लम लागछि हला तो काली तो हमें देखिबा एटा ठीक अछि ओके तुम बुझा पला तो या कहली Yes, sir. Thank you, sir. ओके थैंक यू हम कल देख